to Safalta classes. So everyone please join the session with me, and this session is all about okay, everyone please join the session. So guys, very good evening to all of you. So I am Kumar Chandan, your quant faculty, and today this session is all about your fast calculation technique. But today we'll cover all those technique जो हमारा last class में cover नहीं हुआ था. So please join everyone this session with me. Dilnawaz, Ahmad, Soumya, Shikha. Good evening, Shikha and Soumya. Good evening. Good to see you. Dilnawaz, please join. So today topic is fast calculation technique, and we'll start the topic one by one after this class, because I think after this class we can start with the numbers, classification of numbers, then ratio, then ages, then mixture, percentage, all those chapter one by one. Okay, divisibility rule, everything we'll discuss, SCF, LCM. But up to this class, at least we have to know about the fast calculation. So rest thing we'll discuss today, like according to the last class, some were not discussed by me, so I already told you. Okay, so abhi jaldi se jaldi join kar lijiye so that we can start the session on time. And this is all about the CUET exam. So common university interest is, as of you know, everyone I think know about the notification came yesterday. So we have one session on YouTube. You can also watch that session, because form filling date start from day after, I think 6th of April to 6th of May. 6th of May is the last date, and exam in the month of July. So time कम है, पढ़ना ज्यादा है, तो ध्यान से पढ़िएगा, मजे से, क्योंकि आपको टाइम जितना मिल रहा है उसमें आपको बहुत अच्छे से कवर करना है. तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं जो थोड़ा सा इफेक्टिवली, थोड़ा सा प्लानिंग के साथ पढ़ो, ठीक है. जितना मैं बता रहा हूं उसको आप इंटरटेन करो, उसका यूज करो, ठीक है. वट एवर बी द टेक्निक, मैंने बोला ना, जो मजे से पढ़ो, मतलब थोड़ा सा अपना एफिशिएंसी हाई करके एकदम बिल्कुल अच्छे से, जो हमको इसी बार क्रैक करना है at least, ठीक है. So that is very important for all of you. Okay, so guys, let me start the session with calculation technique, fast calculation technique. One of our master chart जो मैंने last class में discuss किया था, वहीं से start करते हैं. तो चलो, let me start the session with that chart. What is that chart? This is the important chart. So in my last class, Mandeep also joined. Very good, Mandeep, Khushi, Shikha, Soumya, Dilnawaz. Very good to see you guys. Good to see you. Why I am going with this topic? मैं चाहता तो सीधा स्टार्ट कर सकता. आई एम गोइंग विथ रेशियो, परसेंटेज, अर्थमेटिक सीरीज, एनीथिंग, मींस लाइक सरफेस एरिया, देन टाइम स्पीड, टाइम वर्क, एनीथिंग वी कैन स्टार्ट, नंबर सिस्टम. बट आई एम स्टार्टिंग विथ दिस बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन quickly, you need some calculation, and that calculation will come from here. So at least 2 to 3 classes compulsory for all of you. If you know all those technique, automatically your speed will be high. So that is important, ठीक है. तो ध्यान से देखना, whatever you have doubt, please tell me. Okay, so this is just like a for master stroke on calculation, like percentage chart, then this is divisibility rule, this is table should be a strong 1 to 20, then cubes, then squares, and this is the multiplication rule, that is also very important. Cancellation technique, that is also very important. Digit sum method, that is also very important. But percentage chart, divisibility rule, and cancellation and multiplication, these 4 segment will use in the complete math. But digit sum method, square, cubes, this will mostly used in some of the chapter, like third indices, like simplification, not in every chapter. So in the last class, I think I already discussed this percentage chart, then multiplication chart by me, and digit sum little bit. But today this session will start with one question based on digit sum, and then come back to cancellation technique, some multiplication extra technique जो मैं आज discuss करूंगा. So guys, get ready for the class, and this is the second chart. This is the second chart because in quantitative aptitude section, if I talk about the all topics, most of the topic, so a scoring topic like average, mensuration, probability. mensuration का मतलब क्या होता है? क्षेत्रमिति, एवरेज, औसत. हिंदी भी मैं बता रहा हूँ. एलिगेशन, प्रोग्रेशन सीरीज, जहां पे हम लोग एपीजीपी जो गुणोत्तर श्रेणी वगैरह आप पढ़ते हो, समानांतर, वो सब है. लाइन एंगल सर्कल पढ़ेंगे. रेशियो के अंदर ये सब टॉपिक हैं, ठीक है. परसेंटेज के अंदर ये सब टॉपिक हैं. दीज आर सब टॉपिक अंडर टाइम एंड वर्क. सो फॉर ईच सेगमेंट आई एम राइटिंग डाउन ऑल द सब टॉपिक. प्रॉफिट लॉस के अंदर ये टॉपिक है, एसआईसीआई के अंदर ये टॉपिक है, जहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं. सो क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दीज सब टॉपिक. सो दिस इज जस्ट लाइक अ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन ऑफ योर CUET paper. Third thing, this is the master chart.
ये मास्टर चार्ट को आप बस एक स्नैपशॉट ले सकते हो तो ले लो, बिकॉज आई ऑलरेडी डिस्कस इन माय प्रीवियस क्लास 1/12. ओके, बिकॉज 1/6 यू नो व्हाट इज 1/6, 16.66%. तो हाफ ऑफ 16.66 इज व्हाट, दैट इज 8.33. एंड व्हाट इज 8.33, हाफ ऑफ 1/6. अगर आपको कोई पूछेगा 1/6 का हाफ क्या है, यू कैन डायरेक्टली टेल यस 8.33. यस, करेक्ट, ठीक है. सो दिस इज द चार्ट. So there are some important terms जो मैं स्टार कर रहा हूं. These are the common data for your exam. So you can at least memorize these data for your upcoming exam. Okay. So these are the common data, not this data. These are the common data. Okay. So just take the snapshot, nothing else. Okay. Now come to this section. So I am going to start this session with first 3 and 2 multiplication rule. So 1 to 2 minutes is enough for this rule. Okay. Then we'll come back to question. तो ध्यान से देखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं. देखो ये मैंने कुछ सम लिए हैं जो बेस 100 पे है. कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं बता रहा हूं, बेस 100 पे है. अब देखना, देखिए. ओके, सुरेश कुमार ऑल्सो ज्वाइन. गाइस जो भी डाउट होगा पूछना, अच्छा लगेगा, क्योंकि जितने भी डाउट्स आप पूछोगे ना, आई वाज आल्सो एस्पिरेंट लाइक यू, तो मुझे पता है जो आप फेस कर रहे हो. दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू. मैं चाहता तो डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाता, बट मैंने 2-3 क्लास इसलिए रखी थी ताकि आपका थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा हो. लिसन, सपोज दिस क्वेश्चन इज 106 into 109. सपोज यू हैव टू मल्टीप्लाई. सो 106 इज व्हाट, 106 इज 100 plus 6. बेस 100 पे 106 इज हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम 100, दैट इज 6. so this is 100 plus 6. correct. now what is 109, that is 100 plus 9. so basically the rule is very simple. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, if you multiply these two, तो you will get 54. Are you correct? एकदम बिल्कुल बिल्कुल. Are you getting my point? This is correct. Okay. Now अगर मैं इस दोनों को एडिशन करूं तो 106 plus 9 और 109 plus 6, आंसर will be 11554. Very simple. Answer will be 11554. सो दिस इज अ रूल. बट इसको फास्ट भी किया जा सकता था, ऐसा नहीं था फास्ट नहीं कर सकते थे. 100 plus 6 है और 100 plus 9 है. वी कैन मल्टीप्लाई बोथ द यूनिट डिजिट. सो 100 plus 6, 100 plus 9, so directly 54. correct. and second thing, 106 में either you can add 9 and 109 में either you can add 6. so definitely answer is 115. so this is the oral calculation without pen and paper, and this is the book वाला कैलकुलेशन. तो बुक वाला कैलकुलेशन अगर सीख लिए तो फिर क्लास आने का मतलब क्या है, ये सीखो. दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, सपोज someone ask you जो what is the value of 105 into 108, 3 multiplication on the base of 100. तो सिंपल, 5 8 जा 100 plus 5, 100 plus 8, तो 5 8 जा 40, and 105 plus 8, 113, and 108 plus 5, 113. so both the equation will balance. दोनों बैलेंस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आंसर विल बी सेम ना. तो यही आएगा ना 11340. तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे 100 प्लस वाले में. बट एक यहाँ क्रॉस क्वेश्चन आप में से कोई कर देता तो सही में आई एम वेरी वेरी हैप्पी. दैट इज व्हाट दिस. तो सर 105 और 98 को मल्टीप्लाई करने में 1 is above 100 and 1 is below 100. This is plus 5, this is minus 2. Now what is the procedure? Because both is not more than 100. If more than 100, if this will be plus, you can multiply both. But here these are not exactly same. So in that case क्या करना है आपको मैं बता. आलोक सिंह please join. Okay. Okay. So good evening. Good evening. So very simple. How to connect this two? The quick approach is very simple. मल्टीप्लीकेशन में अगर मैं मल्टीप्लीकेशन में प्लस इंटू प्लस डेफिनेटली प्लस, बट प्लस इंटू माइनस माइनस. सो दिस इज 5 2 जा 10. इफ दिस इज 5 2 जा 10 गाइस, सो माइनस 10 नॉट प्लस 10. सो दिस इज माइनस 10. तो 100 माइनस 10 इज 90. सो यूनिट प्लेस विल बी 90 नॉट 10. If this is minus 10, so this will be low, this will be 90. Now you can connect from this side or this side. So 105 minus 2, 103, 98 plus 5, 103. तो 103 जो आएगा उसमें से -1 करना है. Means on the base of 100 always subtract 1. So generally this value will come, that is 10290. So this is the answer for this particular question. Any doubt? So please ask me. कोई भी डाउट हो पूछ लो. तो सिमिलर यू कैन सॉल्व ऑल दीज सम. ओके,
So this is the first one technique. Second technique, I think if you watch my previous class, okay, so I think digit sum were discussed. Okay, digit sum were discussed by me. So for the digit sum, if I talk about the solution of this question, क्योंकि ये question एक, why did we minus? That's the good question, Soumya. In the base of Soumya, actually, whenever the 100 plus or 100 minus, one is more than 100, one is less than 100, then the value will come after subtracting 1 from the given sum. Okay, always, because of base is 100, Soumya, always subtract 1. For example, Soumya, मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है, 108 into 97. So 108 is -2 and 97 is -3. Sorry, 108 is +8 and this is -3. Now correct my mistake. ठीक है, this is okay. सौम्या ध्यान से देखना, please listen carefully. ठीक है, so now this is +8 and this is -3. so base 100 है तो 100 पे 1 माइनस करते हैं, रूल है, ठीक है. so 8 3s are 24, but this is not 24, this is -24. तो 100 -24 किया था मैंने, because base is 100 डिफाइन है, तो 100 -24 76. करेक्ट. नाउ 108 -3, देखो ये दोनों बैलेंस ही होगा. 108 -3 दैट इज 105 एंड 97 + 8 105, बट सब्ट्रैक्ट 1, तो एक माइनस इसलिए कर देते हैं, नहीं तो ये फिर आपका, तो 105 - 1 104. तो आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट. रूल है, तो यहाँ पे जब आप करोगे ना 100 के बिहाफ पे, तो आप सब्ट्रैक्ट -1 करोगे. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था. ठीक है, आई थिंक देयर इज नो डाउट. ठीक है, अब मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया, अच्छा क्वेश्चन है, एक ऑप्शन जो है वो मैंने लगाया है अलग से. ठीक है, सो आई थिंक इन द माय लास्ट क्लास डिजिट सम मल्टीप्लिकेशन के साथ डिजिट सम शायद मैंने करवाया था, डिजिट सम. यस, तो लेट मी चेक द क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन यूजिंग डिजिट सम. देखो कितना आसान और कितना इजी हो जाएगा, ध्यान से देखना. लिसन एवरीवन, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, लिसन. देखो, if I multiply with this number, this is challenging term. ये challenging term है. क्यों challenging है? क्योंकि आपको इतना पता होना चाहिए, जो अगर ये हम solve करेंगे तो time लगेगा. This is also challenging. ठीक है, approach should be fine. approach बहुत ही अच्छा होना चाहिए, और वो आता है प्रैक्टिस से. ठीक है, अगर आप मैथ 10-15 दिन नहीं बनाओ तो ऑटोमेटिक आपको लगेगा मेरा स्पीड लो हो रहा है. ठीक है, ऐसा चीज है. देखिए, एक तरीका है 32 को 10 टाइम्स कर दिया तो 320. जब मैंने इसको 10 टाइम्स किया तो आई एम इंक्रीजिंग बाय 0.25. तो 0.25 ऑफ 32 विल सब्ट्रैक्ट, तो 0.25 मतलब 25%, 1/4, तो 8 माइनस किया. सो वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 312. पॉइंट नंबर 1 करेक्ट. ठीक है, अगला देखो, प्लस इफ आई मल्टीप्लाई दीज टू, कर देते हैं मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 261 आएगा. सिमिलर टू दिस. ओके ओके, एंड -495 इज इक्वल टू x. तो फॉर दिस पर्टिकुलर सम, जो सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन आप में आएगा सिंपल सा, अगर मैं इसको देखूं तो 2 + 1 3 एंड 3 - 5, यूनिट प्लेस इज 3 - 5, तो यूनिट प्लेस शुड बी 8 एंड गो थ्रू द ऑप्शन. इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आंसर इज दिस वन. सो यूनिट प्लेस से यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो. यूनिट प्लेस से भी यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली. करेक्ट. देखो, डॉट तो पूछा करो, अगर होता है तो जरूर पूछा करो, बट दिस इज द ट्रेडिशनल अप्रोच. ये नहीं करना है. इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, इट विल टेक सम टाइम, दैट इज अ वेस्टेज ऑफ योर टाइम. इतना टाइम क्यों लगाओगे आप? डोंट वरी, I am giving you the best explanation because of the digit sum. What is digit sum? Simple. अगर आप में से बहुत को digit sum अभी भी नहीं पता है तो मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ. Digit sum is the simple, the sum of digit to make the sum of digit in a single digit. Sum of digit करना, उसको single digit बनाना है. That will be considered as a digit sum. Okay. Second thing, if the sum of digit is 9, then tends to be 0. वो 0 होता है. That will be 0. Okay. So for this question, if I use the digit sum method, because whenever the complex sum will come, जब अभी कभी भी complex sum will come, then you can solve this type of question using that digit sum. So 32 नहीं देखना है, 9 + 7, 16 + 5, 21, 2 + 1 3. So the digit sum of this number is sum of digit 21. 21 single नहीं है तो 2 + 1, that is 3.
and this is 3 plus 2 5, so into 5, so 5 3s are 15, so digit sum of this is equal to 6, so the digit sum of this is equal to 6. ऐसे बनाना है, बट फास्ट करना है थोड़ा सा प्रैक्टिस से, ठीक है. कम टू द सेकंड, 7 plus 5 12 13 to 15, तो 15 का डिजिट सम 6 into 2 plus 1 3, 3, तो 3 6 3 जा 18, 18 का digit sum 9, 9 tends to 0. It means the digit sum of this complete sum is 0, and that is equal to x and plus 9 and 9, 18. 18 means the sum of digit is 9. 18 means 1 plus 8 9 also 0. So simple, x का value should be 6. So sum of digit should be 6 according to the option. अब ऑप्शन पिक करना पड़ेगा आपको, ठीक है. बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये मुझे लगता है ये मेथड, ठीक है. तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट इसका आंसर होगा, क्योंकि 15 इसका सम ऑफ डिजिट है, तो सम ऑफ डिजिट 15 है, तो बेसिकली सम ऑफ डिजिट मींस डिजिट सम से ये कितना होगा 6, and you want 6 because x is equal to 6. So this is the application or use of digit sum in the question. Okay. अगर अभी तक किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी, क्योंकि अब मैं कुछ और पढ़ाने जा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, दैट इज स्क्वायर एंड क्यूब मेथड. ओके, एनी डाउट तो यू कैन आस्क मी, एनी डाउट, डोंट वरी. ठीक है, ग्रेट. ठीक है, चलो. सो कैंसिलेशन टेक्निक इज लिटिल बिट डिफरेंट. We'll come back after some time. First, we'll discuss a square and cube root technique. Sir, please give us practice questions also. Definitely, Mandeep Kaur, I got your point. So we have a lot of questions. Mandeep Kaur, we have a lot of questions like this question, this question, sorry, this question. We have so many questions in today class. Don't worry, don't worry. These are the questions. Okay. So these are the questions. We have so many questions. Okay. But first, we'll give you the theory. That's why I am waiting for the concept first. ठीक है, don't worry Mandeep Kaur, good point. I am giving you because first calculation technique is important. First you know the technique, then you can solve the question. But don't worry, we have a lot of slide in today class. We'll first the question, we'll first the technique. Based on that we can solve the question and then we'll go for the homework. Okay, don't worry. So now a square and cube root technique. So first we'll discuss the square technique. वर्गमूल हिंदी में बोलते हैं. ठीक है. So I am giving you one simple method. Don't find out the question or a square root using this method when the number is 3-digit number or 4-digit number. I think 3-digit number is easy, like 30 का square 900, like 27 का square, like 28 का square, जो भी आप 784, that will be easy. In the case of 5-digit number, the problem is start. तो यहाँ से सीखना है. ठीक है. तो listen. Whenever the simplification will come, simplification means this. Perfect square root will come, and approximation means this, non-perfect. So perfect is the case of simplification, non-perfect is the case of approximation. ठीक है, that is important. Now perfect, this one this one is perfect. Why perfect? Let's see. मुझे नहीं पता perfect पर imperfect क्या होता है. Okay, listen the solution of this. Okay, so suppose I am going to solve the square root of this number. तो root में यहाँ power is 2, but that is not visible. Am I correct? That is not visible. So from the right side 2 पे cross करेंगे. 2 पे cross क्यों करेंगे? Why I am crossing from the right side at 2 place? Because power is 2. Now listen. Below this number means below this number, just below this number. Okay, below this number. The perfect square you have to find out below this. So 153 के just below which number is a perfect? That is 12 का square. So this is 12, means 144. Am I correct? 144. Definitely correct. Okay. So subtract करने के बाद ये 9 आया. ठीक है. और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? जो next digit है उसको यहाँ पे put करेंगे. The next digit will come always after subtracting this number. So this is 97. This is step number 1. Second step, whatever be the number below the square, add the next digit. So 12 में add करना है 13. So 12 plus 13 is 25. And then you can divide by 25 to this number. So basically सबको पता है 25 4 जा close to 100. So this is close to
4. So definitely the answer will be 124. So this is the single and universal technique you can solve all the square root जहाँ पे 5 digit हो 6 digit हो जो भी आए you can solve. Okay, so this is the solution of this square root. Again I am going to solve this because I know कुछ को तो प्रॉब्लम होता है, बोले ना बोले लेकिन कुछ को प्रॉब्लम होगा. फिर से बता रहा हूँ, राइट से 2 पे क्रॉस करो, इसके नीचे का स्क्वायर देखना है, दैट इज 12 का स्क्वायर. 12 का स्क्वायर इज 144. सब्ट्रैक्ट दिस इज 9. नेक्स्ट डिजिट विल कम हियर, इसका कोई वैल्यू नहीं है, 97. 12 के नेक्स्ट डिजिट दैट इज 13. यू कैन ऐड 13, सो 12 प्लस 13 25. Divide by 25. 25 4 ja close to, exact will not cancel out, so close to, so this 4 will come here. So this is the square root, means 124 ka square. If you calculate, your answer will come definitely, that is 15376. definitely hoga wahi, theek hai. Similar you can do in this question also, in this sum also, and cube is very very easy. Cube to 2 second mein solve hoga, theek hai. In this the same procedure, like below this 15 ka square 225, so this is 0, 0 will come, and this is 6, ठीक है, correct ना. So 15 के next कौन आता है, 16, तो 16 add, तो 15 16 32, 15 16 32, okay, so 32, sorry 31 not 32, so 15 16 30 31, so if you cross this one, so 31 2 ja, so definitely 152. so if you calculate 152 के close, the square root will come. okay, तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. सो दिस इज अ वेरी इजी वन. स्क्वायर इज वेरी वेरी इजी. स्क्वायर रूट तो बहुत ही इजी है, ठीक है. अब नाउ कम बैक, बेसिकली दीज आर सम एग्जांपल यू कैन फाइंड आउट. यू कैन फाइंड आउट, आप बोलते हो ना होमवर्क, तो फाइंड आउट, दिस इज योर होमवर्क. एट योर एंड यू कैन कैलकुलेट दिस, ठीक है. और जो भी इसमें डाउट होंगे आप मेरे से पूछना. जैसे ये सब इजी है, दीज आर इजी, लाइक 46, दीज आर लाइक 94, these are good. तो फाइंड आउट दीज थ्री. जैसे आपने मनप्रीत यू टोल्ड मी, मनदीप सॉरी, जो गिव मी द होमवर्क एटलीस्ट आफ्टर दिस. सो फॉर स्क्वायर रूट दिस इज द होमवर्क, फाइंड आउट द 3 स्क्वायर रूट. ओके, so now come to the next theory. okay, we have one question also, very good, we have one question also. okay, so Mandeep you can solve and everyone you can solve that 3 square root. okay, now we have one question based on square root, not the cube root. cube root पे अभी आएंगे, ठीक है. listen guys, listen, जैसे ही अब क्लासेस चलने लगी, flow will automatically come. this is very easy, 18, and this is 3136. 50 का square you know, 2500. 60 का स्क्वायर यू नो, 3600. दिस नंबर लाई बिटवीन दैट टू. तो 50 प्लस 56, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, एंड दैट इज प्लस दिस विल बिकम 14, एंड दैट इज इक्वल टू x. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन. 9 6 15 5 8 13, देख लो कौन सा आंसर आएगा. डेफिनेटली द आंसर विल कम. सो दिस इज द इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, नाउ कम बैक टू क्यूब मेथड, क्यूब रूट. Cube root is very easy. I think according to me the answer of cube root will come in 2 seconds. In 2 seconds only. But for that you have to know about 1 to 25 ka cube. Then only. Okay. So listen. Cube root. Unit digit. What is the unit digit? 1 ka cube 1, 2 ka cube 8, 3 ka cube 27. So I am writing down unit digit only. 4 का क्यूब 64 4, 5 का क्यूब 125 5, 6 का क्यूब 2166, 7 का क्यूब 3433. ओके, यहाँ पे है. 8 का क्यूब 512 दैट इज 2, एंड 9 का क्यूब व्हाट 9 का क्यूब 729. सो दीज आर द यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब. करेक्ट. अब देखो इसको कनेक्ट कैसे करेंगे. जनरली इन क्यूब रूट दिस पावर इज ऑलवेज गिवन. इफ नॉट गिवन, वो जनरल थॉट है जो हाँ स्क्वायर रूट होगा, ठीक है. सो दिस मैंने क्रॉस किया है, क्रॉस फ्रॉम द राइट एंड. व्हाई राइट इन? बिकॉज पावर इज 3. इफ पावर इज 3 वी कैन क्रॉस फ्रॉम द राइट इन. अब मैंने इसको राइट इन से क्रॉस किया है. सो 8 कम्स इन द टेबल ऑफ 2. 8 कम्स इन द टेबल ऑफ 2. क्यों 8 कम्स इन द टेबल ऑफ 2? बिकॉज 8 कम्स इन द टेबल ऑफ 2 का क्यूब. 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8. सिंपल. Then cube root of 10 just below. Again the same concept.
जस्ट बिलो मैं लिख देता हूं, जस्ट बिलो। ओके, जस्ट बिलो मतलब जस्ट बिलो का मतलब उसके जस्ट नीचे। क्यूब रूट ऑफ 10 के नीचे विच नंबर विल कम, विच नंबर विल कम? क्यूब रूट ऑफ 10 के नीचे, दिस इज नॉट परफेक्ट। क्यूब रूट ऑफ 9 नॉट परफेक्ट। क्यूब रूट ऑफ 8 जस्ट बिलो, यस दिस इज परफेक्ट। Similar to the square root, what is the just below perfect cube root? 2. So this is 2. So guys, this is 2 second. 2 second only, 2 second only. Second, यहां थोड़ा सा इसको मैं हटा रहा हूं। सेकेंड 7, 7 comes in the table of 3 का क्यूब, so write down 3 and below 148, 148 के नीचे कौन सी नंबर का क्यूब बनेगा? 5, 125। क्लियर? बहुत ही सिंपल। किसी को भी डाउट है? एनीवन इफ यू हैव डाउट मुझे पूछा करो, मैं बताऊंगा, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, जब आपके डाउट्स आते हैं तो ये लगता है अच्छा ये भी सोच रहे हैं आप। ठीक है, तो जितना भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी, आई विल गिव यू द आंसर। सो दिस इज 22, second is what? Second is 53, third is what? 2 comes in the table of 8, 2 comes in the table of 8, and below 15, 54 का क्यूब, below cube root of cube root of 54, the perfect number is 3 का क्यूब 27, so 3. So similar you can solve these 3 because if you know 12, 11 to 20 का क्यूब, then 25 का क्यूब, sorry, then you can only find out the answer of these. Okay sir, explain it again. Okay Alok, definitely, why not? Okay, so Alok Singh, please listen carefully that I am going to tell you here how to solve this type of sum. From the right in cross mark on third, please. Why? Because digit in cube is 3, correct? So take this unit digit 8, 8 comes in the table of 2 का cube, so write down the table 2. Second, 7 comes in the table of 3 का cube, so write down 3. This is the first step. I think Alok Singh, you are getting my point. Now come to the next. Next is what? Basically below cube root of 10. Someone asks you below cube root of 10 which number is the perfect cube? Just below, not below, just below. Cube root of 8 means 2. Someone asks you what is the value of cube root just below 148, 147, 146, 145 और नीचे आओगे तो 125 perfect. Yes, 5. Suppose someone asks you cube root of 15625. From the right end 5 comes in the table of 5 का cube and cube root of 15 के just below, not cube root of 14 perfect, not cube root of 13 perfect, not cube root of 12, not cube root of 11, not cube root of 10, not cube root of 9. 9 is a square, so cube root of 8, so 25. I think now Alok Singh, you are getting my point. I think now you are getting my point, and this is the complete explanation, but I'm not going to explain this because this is just like a homework. Does this technique work for power of 4? No, Soumya, because you know for each and everything is not exactly connected. Means here this technique is only applicable up to power 3. That technique will only applicable for a square root. Okay, so a square ka power 2, 4 you can solve like this. Okay, don't worry Soumya. Okay, so now don't worry, you can solve this. Now we have one question based on a square root, but this square root little bit different. This square is little bit different. Why? Listen, 3 root 8 plus root 8, 3 root 8 plus root 8, what is the value? 4 root 8. बच्चे बोलते हैं ये कैसे? अरे रूट 8 कॉमन ले लोगे तो you can get 3 plus 1, so this is 4 root 8 ना? Am I correct? Okay, into 8 root 8 plus 7 root 8, 15 root 8, and minus 98 equal to x. So for this question solution is very easy. 4 into 15, 60, and 60 into root 8 into root 8, root 8 into root 8, that is 8. So 60 into 8, 480 minus 98. So 480 minus 98 कितना हो जाएगा? 382. Simple. 480 minus 98, 100 minus करोगे तो 380 और 2 बढ़ा दोगे तो हो गया. So that is equal to 382. So this is a very easy question. Okay, so this is a simple question based on your square. ठीक है,
बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन. सो फॉर दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग यू वन टेक्निक, क्योंकि एक ही टेक्निक है जो मेरे हिसाब से अभी आपको बताना है मुझे, वो है कैंसिलेशन टेक्निक. ठीक है, और एक मैं आपको सबसे पहले फ्रैक्शन बताऊंगा. यस, so now come to the fraction concept. ठीक है, then we'll come back to the cancellation technique. Cancellation technique is little bit different. Okay, so for fraction technique, listen, I think in this class most of you having the idea, जो in case of multiplication, when base will be same, power added, correct. In case of division, when base will be, sorry, when base will be same, power subtracted. For example, if I write 2 ka power 2 into 2 ka power 3, this is 2 ka power 5. Yes, this is correct. सही है. But if I write 2 ka power 5 upon 2 ka power 3, then this is 2 ka power 2, because in the case of multiplication, power added, in the case of division, power subtracted. So these are the two basic theory. ठीक है, but यहाँ पे कुछ नया चीज आपको देखने को मिला. 2 से 1/4, we can also write 2 plus 1/4, but this rule is also applicable only in the case of addition. Means suppose I am writing down 2 plus 1/2, so that is 2 से 1/2. Please check on the both side LHS RHS equal. क्यों? क्योंकि ये 5/2 है और ये भी 5/2 है. So both will be same. Both will be same. Correct है? Okay. So this is the simple theory. Based on that we have some question. तो पहले हम लोग ये क्वेश्चन ना बना के ये भी नहीं, पहले ये बना, एक मिनट, लेट मी चेक. ओके, पहले इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट दिस को सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो वी हैव 4 ऑप्शंस हियर. लिसन, आई एम गिविंग यू द बेस्ट टेक्निक बिकॉज इट विल टेक लेस टाइम. लिसन, whenever this type of sum will come, suppose, okay, so you have one method. That method is what? 1 plus 3 minus 2 plus 11. What is this? This is take the linear term separate and take the fraction term separate. तो जब fraction term को separate करेंगे तो 8/9 plus 2/7 minus 1/7 plus 1/6. So this is the detailed explanation of this question. ओके, एंड वन थ्योरी जो मैंने आपको अभी बताना है वो इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे 11 और 4, ये 15 में से 2, 13, 13 एंड प्लस. अब देखो यहाँ पे क्या है, एलसीएम इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो एलसीएम इज लाइक 6 और 9 का एलसीएम 18 और 18 into 7. सो 126 इज द एलसीएम. 126 इज द एलसीएम. अब आप इसको करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. Definitely you can solve, but you need the idea of the table. अब 14 9 जा तो 14 8 जा 112 plus this is basically 1/7. तो यहाँ पे 18 मैं लिख देता हूँ. 36 because this is 36 minus 18, तो 18 and plus 21. So this value is 13 plus 151/126. अब यहाँ पे now one theory will come. अब वो theory क्या है मैं आपको बता देता हूँ. Suppose I am writing here 19/10. आराम से देखो 19/10. 19/10 इज न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में व्हाट इज द डिफरेंस? 9 का. तो 1 plus 9/10 करेक्ट है, बिकॉज 10 1 जा. तो सिमिलर 126 1 जा और डिफरेंस 25 का, तो वी कैन राइट 13 plus 1 plus 25/126. तो दिस इज 14 plus 25/126. तो मैंने बताया था ना 2 plus 1/2, 2 से 1/2. So 14 plus 25/126. Yes, this is the answer. तो आंसर इज बी. तो थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन मैंने ले लिया. क्यों अच्छा ले लिया? क्योंकि मैंने जो डिजिट लिया उसमें एलसीएम थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया. देयर इज अ ट्विस्ट इन द एलसीएम. कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, बट डोंट डू दैट. क्यों? क्योंकि अगर ये आप करते हो तो दिस इज सिंपल द वेस्टिंग ऑफ योर टाइम. सिंपल वेस्टिंग ऑफ योर टाइम. मैं तो और कुछ नहीं बोलूंगा. ठीक है, डू वन थिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू. डू वन थिंग वेरी सिंपल, very simple and very easy for all of you. Listen, this value basically 11 plus 3 plus 1, 15 minus 2, 13. So answer is 13 plus. So these two answer will cancel out. आप समझो चीजों को, कुछ तो आप अलग रखो बाकी से, then you can beat your exam. Simple. ठीक है. अब क्या है? प्लस, ध्यान से देखना,
एलसीएम 9776 का एलसीएम इज 126. तो डिनोमिनेटर इज 126 एंड वैल्यू इज मोर देन 13. सो दिस इज द आंसर. ये डिनोमिनेटर 223 होगा ही नहीं. सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन बाय मी. अगर समझ में नहीं आया तो ये यू कैन रेज द क्वेश्चन, नो इशू. ठीक, आराम से पढ़ो, डोंट वरी, बट एटलीस्ट यू हैव नॉलेज अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, लेट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. एक अच्छा सा क्वेश्चन और मैंने ले लिया, लेट वी सॉल्व. गाइस इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी. ओके, डोंट वरी. ठीक है, अब देखो, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन अगेन. थोड़ा सा आपको लग रहा है जो थोड़ा सा लेंथ इसका ज्यादा बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स अ सिंपल क्वेश्चन. 15 plus 33 value is what? 48 and plus 2/3 plus 1/3 3/3 1 plus this is 75/4. How? 18 4 ja 72 plus 3 75/4 and into 15 7 ja 10 15 7 105 15 7 ja 105 plus 3 to 108 upon 15 and minus 34. So this is the final step of this question, correct? तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो 15 का 5 जा this and this is 27. तो 27 into 5 135. तो बेस एक मिनट हाँ ठीक है. तो 135 plus this minus 34. तो 49 plus 135 minus 34 is equal to x. So simple, this is 101 और ये 49 150 is the answer. So this is the answer. Calcutta is the correct answer of this question. ठीक है. So C is the correct answer of this particular question. तो कौन सा टफ क्वेश्चन मैंने दे दिया. ठीक है. So it's a simple question. Okay. I think it will be clear for all of you. If you have any doubt, please ask me. कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. ओके तो इस पे एक क्वेश्चन है जो मैं होमवर्क में दूंगा. ओके सो आई थिंक दिस इज नो नॉट दिस वन, दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन. और इस क्वेश्चन को आप बहुत आराम से बनाना. ठीक है, देखना बना के परसेंटेज पे ही सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फ्रॉम फ्रैक्शन. ओके ठीक है. नाउ कम टू वन यूनिक टेक्निक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू. क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, मैंने शुरू में भी बोला यहाँ पे ये टेक्निक. तो इसको हम अभी समझाएंगे जिसमें 10 मिनट लगेगा. ठीक है, और इसी पे हम लोग क्वेश्चन करके पूरे कैलकुलेशन टेक्निक को पढ़ लेंगे आज. ठीक है, जितना भी मैंने किया है पहले से वो इम्पोर्टेंट है. स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, फ्रैक्शन हो गया, कैंसिलेशन हो गया, डिजिट सम हो गया. ठीक है, ध्यान से देखते हैं. वन टाइम कैंसिलेशन, दिस इज द यूनिक वर्ड. किसी ने दिया नहीं, मैंने रखा है. ठीक है, बिकॉज आई एम क्रिएटिंग दिस मेथड एंड दिस विल एप्लीकेबल व्हेनेवर द नंबर इज परफेक्ट. जब भी कोई क्वेश्चन के आंसर में नंबर परफेक्ट हो तो वहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे ये आपने कहाँ से लिया, जैसे इसमें तो नहीं है ये, जैसे ये आपने कहाँ से लिया, आप बोल सकते हो, यू कैन आस्क मी. तो मैं बोलूंगा आपको दिस विल कम फ्रॉम this is 5.6 and upon this is 0.8, correct, into 252 and that is equal to x square into 36. तो this will be cancel out by 0.7. तो मैंने बोला जो ये टर्म और ये टर्म मैंने यहां से वो लिया है. ठीक है, तो कोई भी चीज मैं जब बता रहा हूं, whenever I am going to discuss any sum, at least you can understand that sum will taken from either from arithmetic topic, either from approximation, simplification, मीन्स तो कहीं ना कहीं से लिया. अप्रोक्सीमेशन में वैसे यूज नहीं होता है ये. ठीक है, चलो सुना, लिसन, दिस इज इंपॉर्टेंट, कैंसिलेशन टेक्निक. ओके, अब ध्यान से देखना. सपोज द सम इज 252 अपॉन 36. प्लीज गाइज, आई एम रिपीटिंग दिस 2 times. So at least you can understand. If you understand this one, I will apply this into entire math section. Don't worry. ठीक है. So this is 18 2 and this is 126 2. This is 9 2 and this is 63 2. This is 9 7. So ultimately 7 is the answer. But there is no such time. इतना time आपके पास नहीं होता है एग्जाम में. So one time cancellation means very simple. Only you have to cancel the term in one shot, like 252 upon 36. So 6 के टेबल में 2 will come at 2 and 7. Why 2 and 7? Why 2 and 7? Because
6 2s are 12 and 6 7 are 42. So in the both case unit place is 2 and 7. Correct. Now if the sum is less than 10 तभी ना 2 और 7 आएगा. 7 कब आएगा कोई बोलेगा, तो सम 10 से छोटा. 2 कब आएगा, द सम छोटा हो 2 से 10 से. इफ द सम इज ग्रेटर देन 10 then 2 will come at 12, 7 will come at 17. So 36 का 10 times 360 and this sum is less than 10. So definitely this sum is less than 10. तो either for 2 or 7 will cancel out. तो डायरेक्ट मैं इसको कैंसिल 7 से कर दूंगा. क्यों करूंगा, बिकॉज आई नो यू नो ऑल्सो 32 2 जा 72. करेक्ट. तो 32 2 जा 72. तो व्हाट इज द मीनिंग, simple, 7 will cancel out. So similar you can solve all this sum. For example this sum 9 के टेबल में 8 will come at 2. Why 2? 9 2 जा 18. So this is 8. 9 2 जा 18. This is 8. Now come to the next. ये तो 2 हो गया. 29 का 10 times. 29 का 10 times is 290. But this sum is greater than 290. So 10 के ऊपर कौन आएगा, 12. So definitely 12. So 12 is the correct. ठीक है, 12 is the correct answer. Okay. So this is the very simple for this particular sum. If anybody having the doubt, please ask me. ठीक है, और भी चीजें अभी और भी sum है. ठीक है. For example, I am taking this sum like 336 upon 21. ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं. सो 1 के टेबल में 6 विल कम एट 6. करेक्ट. एंड 21 का 10 टाइम्स 210. तो सम इज मोर देन 10. तो अगर 10 से बड़ा है तो 16 ही आएगा ना. तो दिस विल बी 16. यू नीड प्रैक्टिस मोर ऑन दिस पर्टिकुलर सम. नहीं तो बच्चा इसको सॉल्व करेगा तो पहले करेगा क्या, 7 3 जा 100, 12 3 जा, फिर टेबल नहीं पता है तो जाके 16 7 जा. व्हाट इज दिस? This is nothing. This is the wastage of your time. If you know the method, that will be good. So very simple technique and we can use this technique and solve the high level questions. ठीक है. अब next. Don't worry, मैं इसी पे end करूंगा. अच्छे से समझा देता हूं क्योंकि ये अगर जो समझ गया उसका लेवल अच्छा रहेगा. Like 3024 upon 189. Question will come in this form. So this is this exactly. अब जिसको ये कैंसिल करने नहीं आता है वो तो डिवाइड करेगा. एंड व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डिवाइड इट विल टेक टू मच टाइम. सो टू मिनिमाइज दैट टाइम ये टेक्निक इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो इन द टेबल ऑफ 9 4 विल कम एट 6. 9 6 जा 54 6 जा. एंड 189 का 10 टाइम्स 1890. तो सम इज मोर देन 10. 118 का 20 टाइम तो मतलब 190 ले लो, नहीं आता है तो 3800. तो दिस नंबर लाई बिटवीन दीज टू नंबर. सो इन बिटवीन 10 एंड 20 6 कब आएगा, 16 पे आएगा. सो दिस विल बी कैंसल आउट बाय 16. सो रूट 16 इज डायरेक्टली कम इन फॉर्म ऑफ 4. तो कितना सिंपल मेथड मैंने आपको बताया. दिस इज 16, दिस इज 16, दिस इज 12 एंड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वन आल्सो. ओके. So these are the cancellation technique. On the behalf of this, we have some problem जो हम लोग solve अभी करेंगे. And अगर मैं बात करूं होमवर्क की तो ये आपका होमवर्क रहेगा. Okay, so Mandeep, you are also you also want the homework ना. So on the basis of cancellation technique, solve these sum at your end. यही आपका होमवर्क रहेगा. ठीक है. Now come back to the question part. Okay, so first we'll solve this question. First we'll solve. अब 2-3 क्वेश्चन करते हैं इस पे, क्योंकि जब तक इसका एप्लीकेशन यूज नहीं होगा आपको मजा नहीं आएगा. ठीक है. अगर आपको कोई बोलेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, if someone told you like please solve this question suppose, तो आप बोलोगे this is my challenging term. Really this is your challenging term. I know this is your challenging term. Correct. So 672 upon 24 into 18 plus 153 minus 345 is equal to x. सही है ना. ठीक है. So
4 के टेबल में 2 will come, 4 3 जा and 4 8 जा, because 4 3 जा 12 and 4 8 जा also 32, तो यूनिट प्लेस। बट एक चीज आप ध्यान से देखो, 24 जो है यहाँ पे, 24 जो है यहाँ पे, 24 का स्क्वायर तो आपको पता होगा क्या होता है, 576। सो 24 स्क्वायर इज 576 एंड सम इज मोर देन 576, सो सम इज मोर देन 24। तो डेफिनेटली या तो 20 के ऊपर 23 और 28 विल कम, सो दिस विल बी कैंसल आउट बाय 28। So 28 into 18 and plus 153 and minus 345, अब जाके आपका आंसर इमीडिएट आएगा। So 8 8 जा 64, तो 4 plus 3 7 7 minus 5, unit place is 2, so only this is the answer, because in the given options 2 एक ही में तो दिया है कि नहीं? तो जब 2 एक में दिया है तो फिर किस चीज का दे दी, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। कितना इजी बता रहा हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट गिविंग यू द, यू कैन से लाइक डिटेल, बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं अपना है, बस कैंसिल किया एक टर्म को, बस वहीं से आंसर। सो इफ यू यूज दिस टाइप ऑफ अप्रोच, योर कैलकुलेशन विल बी इजी, टू इजी। सो यू कैन कैंसल दिस टर्म, ओके, and 8 8 ja 64, 4 plus 3 minus 5, unit place is 2। yes, जो ऑप्शन में 2 होता, then we can change, then we can think over that, okay। so that was first question, this is the second question, very good question, okay। wait, not this question you can solve, root wala question you can solve, that will be the good question, just wait, this question I want, okay, because this question is related to that one, na, similar। if I solve this question, just decimal को हटा दो 2 पे, because 2 point, so root over 3136 upon root over 64 into 256 is equal to x square into 36। ultimately this is your first line of the question। अब यहाँ पे करना ये है, ये तो कैंसिल हो गया, because this is 56 and this is 8, so this is very simple 7। but if you know how to solve, sorry, how to 252 था ना, how to cancel this term immediately 7 पे, this is the fast calculation technique, this is the fast calculation technique। तो 36 7 जा, तो 7 into 7, तो x square equal to 49। if x square is equal to 49, definitely guys x equal to 7 नहीं, plus minus 7, और फिर x equal to plus minus 7, just think, if x equal to plus minus 7, definitely x will be 7 minus 7, तो minus 7 भी आंसर में। if none of these is given, don't say none of these, first plus minus 7 7 minus 7 और उसके बाद none आएगा। so this is a step process, ठीक है। so this is the cancellation technique, based on that you have solved this question, ठीक है। अब आप अगर बोलोगे मेरे से जो होमवर्क, तो होमवर्क इसमें ये रहेगा, कहाँ गया, दिस इज योर होमवर्क, ओके। दिस इज योर होमवर्क, ओके। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं बता, डोंट से दिस इज द होमवर्क, ओके। इसको होमवर्क में नहीं रखो, इसको मैं बताऊंगा, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, लिसन। सो 2 root this minus 21 minus this is equal to x square, you have to find out x, ठीक है। अब जो भी x निकालना है, ठीक है, ध्यान से अब देखना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, लिसन। नंबर इज परफेक्ट, find out x square, so x square equal to 64, x is 8, x square is equal to 36, x is 6, x square is equal to 100, x is 10, x square is equal to 144, x is 12। what is the meaning of this? meaning is very simple, number should be perfect, नंबर आपका परफेक्ट होना चाहिए। अब बच्चा बोला ये नंबर परफेक्ट कैसे आएगा, नंबर परफेक्ट कैसे आएगा, तो सिंपल सा चीज है, ओनली कंसिडरिंग द लीनियर टर्म। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसमें बॉडमास में ब्रैकेट हटा दूं, तो रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर, ओके, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट 8 का स्क्वायर 8 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज दिस वन, करेक्ट। और माइनस 21, ओनली दिस विल गिव द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कैसे?
49 प्लस 8 57 माइनस 21 36 होता है, एक्स स्क्वायर 36, एक्स इक्वल टू 6। अब यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन होता है। नाउ योर क्रॉस क्वेश्चन इज व्हाट सर, where is the root term? Guys listen, this is important one. If the answer is perfect, don't consider the root term, otherwise I am giving you the explanation. 2 into 196 into 2 minus 21 plus root 8 का स्क्वायर plus 7 का स्क्वायर minus 2 into 7 into root 8 is equal to x स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दिस इज 14 रूट 2, तो 2 into 14 root 2 minus 21 plus 8 plus 49 minus 14 root 8 is equal to x square. This is your step number 2, and step number 3 is simple. This will be cancel out. Yes, cancel out होगा, cancel out ये भी क्यों? Because guys 14 into 2 root 2 28 root 2, this is 28 root 2, so only you are going to consider the only the linear term. So why are you worry about, क्यों हमें time waste करना, only considering the linear term. So if you use this level of techniques, definitely you can solve the question easily, definitely, seriously मैं बता रहा हूँ, but you need practice on that, practice तो चाहिए. Okay, if you practice definitely you can solve. ठीक है, तो I think now you can solve some of the question. This is your homework question. ठीक है, तो there are so many question, और कुछ इसमें जैसे ये भी मैंने homework दिया, ठीक है, then डेसिमल को रहने देते हैं, क्वेश्चन में कराएंगे, एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. ठीक है, ओनली डेसिमल लेफ्ट, जिसको मैं आगे नेक्स्ट में कराऊंगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टेक्निक्स, क्योंकि आज मैंने टेक्निक्स जो बताया उसमें मैंने 4-5 क्वेश्चन तो आपको दे दिए, एंड यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चन एट योर एंड. That will be a better thing, because in your exam whenever the question will come, you need the technique, and automatically you can boost your calculation, and calculation always play a vital role in quant section, क्योंकि अगर calculation अच्छा है तो objective paper में you can pick the option, sometime you can pick the means you can solve those question using this type of trick. ठीक है, तो I think मैं ज्यादा तो नहीं आज बताऊंगा इसमें अब. ठीक है, so guys thank you to all of you for attending this session. Okay, so now our next session will come, and then we'll discuss the rest of the thing in my upcoming session. इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने क्यों छोड़े मैं बता देता हूँ. In our upcoming session the topic is simplification. So simplification is not limited to like square root, cube root. That is a compilation, means combination of square root, cube root, decimal, fraction. decimal को मैं वही बताऊंगा. Then your digit sum based, your multiplication, addition, bod mass, all are under the category of simplification. So techniques सारे हो गए. Now it's time for the question, solving the question. So our next class is completely based on simplification, जिसमें मैं question ही solve करवाऊंगा. So guys, I think it will be clear for all of you. If you have any doubt, you can ask me right now. Otherwise, we can wrap up this session. Thank you to all of you guys. कोई दिक्कत हो तो अभी के अभी आप पूछ सकते हो. Otherwise, we can finish this session. Okay, ठीक है, देख लीजिए. Thank you, thank you, thank you. Okay, Soumya, thank you. So rest in my next class. Please read this topic and use these tricks and solve those questions in my upcoming class. Okay, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से आप पढ़िए. ठीक है, प्रैक्टिस करो. That is very important for all of you, because आज ही अगर आप प्रैक्टिस करते हो, स्पेशली कैंसिलेशन टेक्निक पे, you need more practice. That I want. Okay, so please practice on those type of questions. ठीक है, so guys, thank you to all of you. Good luck, bye bye, good night, शुभ रात्रि to all of you. ठीक है, चलो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. ओके, बाय बाय.